Hi, good evening, everyone. I guess I'm audible. Let me just quickly share the link with you for the quiz. Hi, good evening. I guess I'm audible. If I'm audible, please do go ahead with this particular quiz link over here, and soon we can begin with the class. Okay. So we have basically covered most of the topics, right? So today we will be going into a certain area of, you know, uh, certain area of certain things, and ultimately we will be going with more of the topics in cryptography, right? We will be going forward into how the things are actually working into cryptography, right? So we'll be going through with that using hashcat, and then we will be going through man in the middle attacks as well, and I will be explaining you the projects, right? So these are the three things that we would be doing today, and yes, today is the last class. So yeah, please go through with the quiz once for the last time in this month. And hope so I'll see you in the next time as well once you go around and pick up the second part of the class, right? Second part of the course, basically. So once you have completed the quiz, let me know. We'll just begin with the class, right? And I'll be giving you just 2, 3 more minutes, right? So the quiz is basically based on John the Ripper only. Today we'll be going into Hashcat. So yeah. Let me know as soon as you complete the quiz. दोबारा सेंड कर दो. Okay, just a sec. I'm sending it. Three out of five. Okay, no issues. From when second part of the class will start again? Most probably after the this course ends today, right? We'll be doing the project for next 7, 8 days, and then after that we'll be getting the chance to submit for the second part of the class, right? So we'll be asked again. So might be January first week, right? January first or second week. That is when this would be starting on. Right, so you can ask for more details with Gautam sir. I'll let you know into that. Right. So for now, we are just starting with our today's session. Right. We'll be going into Hashcat and finding more data about the hashes. Right. So over here, you might be able to see my screen. Right. I will be going ahead into it. Let me just open your messages. Cool. Okay, so let's just go into it and let's just see what we're going to do. So I'll be just quickly going on into Hashcat as of now, right? I have to install Hashcat on my PC, right? Because I told you that it takes graphic card basically to brute force into the passwords, and Hashcat is prime example of doing everything. And obviously, just understand these kind of things with pretty much understanding, because one of the project is also based on cryptography only. Right, so we have this hashcat over here, and ultimately we'll be using this particular hashcat. So we'll be downloading the overall hashcat folder, and we'll be using that particularly. So I just have to go to its download, right? So you can see these are the total number of protocols that it actually uses, right? Total number of, I would say not protocols, but the hashes that it would basically, crack.
So there are lots and lots of hashes, if you can see over here, that it could basically crack over here. All I have to do is just, you can see it supports your compute device, a GPU, a CPU, and a APU. So you can have anything over here. Most of the PCs would have CPU and GPU, not the APU over here. APU is the arithmetic unit, right? See, just like how you have central processing unit and graphical processing unit, you also have arithmetic processing unit. So arithmetic processing unit is mostly for the devices that do mathematical calculations, but GPU is much more preferred, right? So ultimately, these are the binaries for us to download, and that the PGP signatures are also given through which we can verify we are downloading the correct version, right? And we do not need to do not need to go into that. We just have to download it. So the last edition, the latest edition was basically from 2021, and here we can just click on download. So over here we have a 7Z file, which is right now downloading the latest version, right? So if I go over here, you can see it is also basically showing that there are certain more, versions. So I can download this one rather than 6.2.5. We have 6.2.6 available. So let's just remove that and let this one download. So it would take some time to basically download the latest edition. And they also have their GitHub repository where they have the latest options, right? So ultimately, this is the GitHub repository, and you have to basically use build over here, right? So it would basically build and then ultimately it would work. So mostly for Linux, but you want to download it for our Windows, right? So let it just simply open and let's just simply download this, right? So server of this particular download is pretty slow, right? It's not about my internet. You can check the speeds. Um, so the speed is pretty much good, right? Speed is pretty much good, but this is because of what we can say, the Hashcat server that is right now slowing us down, right? So till the time it's downloading, right, we can simply go forward into try hack me to basically work into the particular thing, right? So let's go into try hack me, and let's simply open our lab, which I want to basically go forward with. So for try hack me, I will be going on with this particular thing called as crack the hash or crack the hashes, right? So here this particular um, crack the hash, right? So we'll be basically going with this crack the hash lab. There's a part two of this as well, which you can go through yourself, right? It would be like having much more hashes. For the first part, it has like 7, 8 hashes over here that we would be going through. Can we get recorded class videos? Yeah, it's obviously available over here on YouTube, right? So you just have to get the links, right? And you will be able to basically get into the recorded classes. All of the classes that we have done so far are basically recorded and uploaded on YouTube, right? So ultimately over here, you can see that we will be using these things, right? So ultimately I have like level 1 and then a level 2. So 2 levels over here, and each level have certain, hashes over here. This is one of the hash, again, one of the hash, again, one of the hash. So as soon as you will be going downwards, right? As soon as you will be going downwards over here, the level of these hashes would basically increase, right? So level of these hashes would basically increase. So ultimately what we'll be doing, like first of all these kind of hashes like this, we would be simply using online websites. We won't be even using Hashcat. Will just be using our online websites over here. And these online websites would basically help me to go around and crack this particular hash, right? So there are certain websites which I can use. And now let me list them, which I would basically use over here. So one is crackstation.net. It's very, very useful and very much, very much into the things like like cracking the hashes, because ultimately crackstation is one of the best websites that you would basically need over here, right? And after crackstation you would basically be going into hashes.com, right? So these two websites are basically the websites that you would like to just remind yourself whenever you're doing cryptography. And there is one more which is called as cyber chef. So CyberChef is one of the best thing that could happen in the form of
these kind of things like cryptography. But CyberChef is much more of a cryptography tool rather than a decrypting tool, right? So over here, CyberChef is just like if you want to encrypt something, for example, you have written the input, for example, my name is, okay, so let's write my name is Sanjay Singh. So this is basically the data. Now let's say I want to convert it into base 64 encoding, so I can just do that and you can see it's encoded. Now if after base 64 you want to encode it to hexadecimal, boom, that's been done. So ultimately that is how you could basically go into these kind of things, right? And you could basically do whatever you want over here. So it could basically decode as well if it's encoded, or if it's any cipher text, it could basically decipher that particular thing. For example, if it's a Caesar box cipher or any other particular cipher that is used, or bcrypt, right? You can use bcrypt to basically make it like this, but you cannot just simply commit it back, right? You cannot basically just take it back from bcrypt to what it was actually, right? Because in encryption or hashing algorithms, it would not basically do the opposite, decrypt, but it would basically try to encrypt the things. So just in case if you're talking about ciphers or if you're talking about encodings, you can basically use these kind of things, right? So that is the basic thing over here. But as of now, I'll be simply going forward and using these two main tools. So CrackStation and hashes.com, they mostly do the decryption part, right, of the hashes and of the main passwords that we get. But ultimately, how they're able to do that, because I told you that hashes cannot be reversed, right? There is no way of reversing the hashes. So how CrackStation and hashes.com are working to reverse your hash? So the answer lies in something called as a rainbow table. So let's basically try to understand what a rainbow table is. So basically, a rainbow table is just a simple thing that we could say that it is basically something that is already having the hashes and their passwords, right? So rainbow table is a table between the passwords, right? All the passwords that are there, and basically the hashes, right? Now these hashes could be MD5 hashes, could be SHA hashes, could be any kind of hash over there. So most of the time, what happens when a data breach happens, and in a data breach, if the hashes are basically leaked, right? And if somebody manages to basically brute force into the hashes and get the passwords out there, these kind of companies like CrackStation and these kind of companies like this that you can see, hashes.com, they basically purchase these databases, the cracked databases, and ultimately use them in their rainbow table. So ultimately, you can just put in the hash, and if it would have that particular hash already leaked sometime before, some years before, some months before, some days before, ultimately it would show me that password. Right. So ultimately, if it would not have that particular thing in its database, I would not be able to see that. Right. So ultimately, all these things have their databases. Right. So ultimately, uh, this means that particularly if you're looking for a password that is pretty much simple, like hello123, or if the password is like password itself, the password is like hello12, if the password is like I love you, are pretty simple passwords, right? So these kind of passwords, we know that they're already kind of hacked in like last so many years. So obviously we would be saying, okay, that yeah, these kind of passwords would be available directly with their hashes in these rainbow tables. So they're not actually doing the mathematics and they're not actually reversing or basically doing the brute force, but they have already bought the databases of already brute forced hashes over here. So if it's a pretty simple hash, you can first of all try to paste it either in CrackStation or either in hashes.com. And if you basically get the output from there, no need to simply fire on your hashcat. You might be able to basically skip the usage of hashcat or John the Ripper over there. So ultimately, what I will be doing, I will be basically going over here and I will be simply just you know
going into this particular thing. So for now, let's say if I want to crack this particular hash through rainbow table, I would be basically taking my first hash. Now it looks pretty easy, right? It's a MD5 hash. You can see only 32 characters over here. And if I just copy it, right, give it the hash over here and click on I am not robot. If I just click on crack hashes, you can see it simply tells me in green that, okay, this hash has been found. The result is easy and the type is MD5, right? So it pretty much tells me because it's pretty easy, right? It's just a simple four-letter character which might be, hacked in the previous times. You can say that the data breaches are happening since last 20 years, and ultimately, we know that these kind of words, like pretty simple words, might be there in the data breaches as well with their hashes intact. And ultimately, most of these hashes would simply be extracted or like simply be brute forced already, and these websites have the databases for that. So that is the basic thing. So we got the answer as easy. Both the websites would equally be useful in this case. So ultimately you can see show the algorithm found. So we have to like capture, right? Capture over here, CRMV5D, and just submit and then capture invalid. Okay, so to give the captcha once again, it's TTD2JU. Okay, so you can see it found it. It's the word easy. So it's pretty simple, right? You can just simply say that, okay, this is the word easy over here that you are gonna go with. What about this second one, right? So if I take this second one over here, obviously we can try to put it, sorry, we can just try to put it over here, first of all, in the crack station, and let's see if we could get the result. So done. The result is there. Password 123. Pretty simple because obviously it's a SHA-1 hash with 140 characters over here with hexadecimal. But we know that's a pretty simple word, so you will be getting the answer password 123. So this is the answer. Let's go with the third hash. Right. So I'll just copy the third hash and let's basically try to go in the website. Let's click on crack hashes and we still got it. The password is let me in, right? So pretty simple over here, right? You can see that how simple it is for me to simply go over into these hashes and simply just try to get into it, right? Because ultimately these are some hashes that are already there. Now, here where is the information starts getting a little bit difficult because here now you are getting some hashes which are not the straight types of hashes over here, like SH256, SH1, MD5. These are all hashes that most of the website uses. But now these are the hashes which might be a little bit difficult to understand with my, this thing like the softwares, like sorry, the websites. But let's try. Nevertheless, let's try this particular hash as well. Now, if I basically try to check this particular hash, it would give me the result. No, unrecognized hash format. So here we are basically getting unrecognized hash format, and it didn't found or didn't find this particular thing in its database. So let's also try this website, right? Hashes.com. Let's see if this website can help me out. So given the uh, captcha KKWFDV, right? So let's see. And here we are able to find that, right? So this website is basically good. We are able to basically see the answer is Bleh, and it's a bcrypt over here, and it's called the blowfish cipher. Basically, the blowfish is working over there. So that is how we are simply able to understand this particular thing. So now the point is that we have found this particular thing pretty simply over here. So the answer is Bleh, BLEH, right? So again, we have basically got our answer. What about this one? Let's basically use crack station first, right? So let's see about this. Let's go and crack hashes, and we got the answer, eternity 22. MD4 hash, again, a pretty common hash. That is why we have got this particular thing, right? Crack the hash is asking about premium. It would not ask about premium because it's not a premium lab, it's a free lab. And I do not have a premium account. So if I'm able to access it, you should also be able to access it, right? Make sure you are into part one, crack the hash, this red colored one, right? So pretty simple. We were able to crack these hashes without using my hashcat till now. So what would I do to basically go into my hashcat, right? So ultimately now the point is I need to
fire up my hashcat and see, because with these particular hashes coming in, it would be a little bit difficult for me to go around and use hashcat, right? So ultimately, for me, I need to basically go around and use my hashcat for these kind of things, right? And also, I need to have a word list. So it basically tells me that the task increases the difficulty, and you would be needing the RockU password list that you would be using. So I'll be like, okay, let's just download RockU as well in my Windows device. So RockU1, RockU.txt is now downloaded. Downloading hashcat has been downloaded, and we can see the whole hashcat is given over here. All I need to do is just simply go around and just brute force, sorry, just extract my hashcat. Let's just simply go into this zip file and extract it on my desktop as of now. Right, so it would simply create a folder of hashcat on my desktop and extract the whole hashcat. Let it do that. We have got that particular thing. Let me go inside and let me also copy paste my RockU file into the same location. So here I have a RockU, and ultimately let me just go around and yeah. So we have RockU in the same location. We have my hashcat over here. Now the point is we have to set up the hashcat. Okay, there's some image by Rafiq. So great. Okay. So let's just go over and try to go into the next hash over here, right? So for now, what I will be doing is I will be simply going to open CMD over here. So CMD, and I have the command prompt. Okay, size is small. Let's open a normal command prompt. So CMD window, and let's go to desktop. Let's go to our hash hashcat, this ls, sorry, dir. Now we have to go again in the hashcat folder, and are we in? Yes. So we are basically inside over here. Rocky.txt कहाँ से लिया? Rocky.txt ये रहा, right? मतलब GitHub पे available है directly, नहीं तो you can also just use this link is given over here. And if you click on it, it would simply download the this thing Rocky, पूरा का पूरा डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है? सो हैशकैट को इस्तेमाल करने के लिए what we need is basically we need to understand the things that how would I be able to configure hashcat, right? So hashcat को जब पहली बार चलाएंगे हम, so it would take some time to work over there, and ultimately it would take its own time, right? So hashcat is something which needs to fired up over here, and hashcat का एक पेज है example hashes वाला, विकी में जाके मिल जाएगा example hashes. सो अल्टीमेटली यहाँ पर भी ये पेज रेफरेंस किया हुआ है हैशटैग पेजेस के अंदर, नहीं तो वेबसाइट पर भी अगर आप जाते हो, विकी में जाते हो, तो अल्टीमेटली यहाँ पर ये सब दिया हुआ है, राइट? सब कुछ दे रखा है, एंड इसी के अंदर यू विल बी बेसिकली गेटिंग हैशटैग यूटिल्स एंड ऑल, डिक्शनरी अटैक, कौन कौन सा अटैक्स है, एग्जाम्पल हैशेस वाला ये पेज आ गया. So you can basically get into the same page, right? So this particular page is very important for now, right? And ultimately क्योंकि यहाँ से मैं चेक करूंगा कि मेरा हैश किस टाइप का है. So ultimately, the point is, this is my current hash. So this is my current hash that is basically given over here. And अब basically जो मेरा क्रैक स्टेशन है, या फिर जो मेरा ओवरऑल वेबसाइट्स लाइक क्रैक सेशन वेबसाइट्स लाइक these kind of websites that I was using would not will not basically work with it. So I have to use hashcat over here. ऐसे में hashcat को मुझे अगर काम कराना है तो उसके लिए I would be using my RockU, and RockU को करवाने के लिए, राइट, RockU के साथ चलाने के लिए I need to basically work upon my hashcat skills. So here I would basically have my hashcat over here. तो पहले इसको देखते ही चलेगा hashcat.exe से. So I have to use hashcat.exe to basically start over here. And ultimately, I would be using this thing only, hashcat.exe, to basically get it started. Right. So the thing is, I need to use hashcat.exe. And उसके लिए मुझे यहाँ पे बस कुछ नहीं करना. I have to just write over here hashcat.exe, and it would basically work. Right. So now it would basically is telling me that to use certain more things over here कि hashcat के साथ आपको और भी चीजें लगानी है, and what kind of options you would use over here.
So hashcat.exe, and ultimately इसके साथ साथ I need to give a hash, either a hash file or something like that. So I need to give that over here, right? So पहले तो इसका एक बार हेल्प मेन्यू देख लेते हैं कि इसका हेल्प मेन्यू क्या है। एंड ऑब्वियसली इट हैज़ अ ह्यूज हेल्प मेन्यू, ठीक है, मतलब काफ़ी बड़ा हेल्प मेन्यू है। तो वी हैव टू कीप इन माइंड अबाउट दैट, टेक सम टाइम टू लोड इट्स हेल्प मेन्यू बिकॉज इट इज़ क्वाइट बिग। एंड हेल्प मेन्यू, यू कैन सी दिस हेल्प मेन्यू ओवर हियर। सो हेल्प मेन्यू के अंदर ना यहाँ पे you would basically get basic examples of this. So let's say if you want to brute force a MD5 hash, तो आपको बेसिकली अटैक मोड ब्रूट फोर्स इस्तेमाल करना है, तो यहाँ से आप डैश ए से अटैक मोड सेलेक्ट कर सकते हो, at what kind of attack mode you would like to use. And there are different attack modes for different kind of things over here. For example, there is combination based attack mode is available over there, right? If you want to brute force uska ek alag attack mode hai, right? So there are different attack modes that are basically can be used, right, with different kind of things. कौन से attack modes है मैं ऊपर जाकर चेकआउट कर सकता हूँ. So these are the attack modes. I can use straight, I can go with combination, I can basically go with the brute force attacks with number 3, and hybrid word list के साथ अगर आपको mask भी करना है डेटा को, mask मतलब if you want to change some part of the data you can use number 6, right? So all these things are basically given. मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, मैं बेसिकली यहाँ पे अटैक मोड 0 का इस्तेमाल करूंगा स्ट्रेट, बिकॉज आई वांटेड टू टेक ऑल द थिंग्स डायरेक्टली फ्रॉम माई rockq.txt, राइट? सो सबसे पहला मेरा जो यहाँ पे आ जाएगा hashcat.exe attack mode आ जाएगा 0, and then ultimately I need to basically have one more thing over here. Attack mode तो मैंने दे दिया, but now I need to basically give the this particular thing, the m value. M value क्या होती है? It is basically the value of my number, and this number basically tells me the um, what we can say our type of hash, right? So सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा that what type of hash are we talking about. So we have to basically give our this particular thing कि हम किस type of hash की बात कर रहे हैं, right? So ultimately ये dash m की value कहाँ से आप दोगे उठा करके, for that we have to come in this. तो ये साइड में numbers लिखे हैं, right? We have all the numbers over here. Now we have to first of all understand what kind of things are we working with, and then we will be able to understand it. तो अभी आप यहाँ पर देखो, this is a particular hash that is given. Now here is where your experience would come in, right? So ultimately in this particular thing you have to count the number of digits first. Let's say कि कितना आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 30 39 40. Then ultimately we have 43, 46, 49, and we have got like 52, 55, 58, and then we have like 61, 63, 64. So लगभग 64 characters हैं. If you multiply 64 by 4, so it would be 64 into 4 would be 256. ठीक है, तो 256 का बेसिकली 256 बिट्स का निकल के आ रहा है. सो इट कुड बी एस एच ए 256. ठीक है, एस एच ए 256 लग रहा है. क्यों लग रहा है? क्योंकि देखो 256 बिट्स का है. 256 बिट्स के बाद द नेक्स्ट थिंग इज इट इज हेक्साडेसिमल. हाँ, तो यहाँ से क्या हो सकता है कि इट इज एस एच ए 256. इट कुड बी दैट. नाउ एस एच ए 256 का यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखा है, तो अल्टीमेटली वी कैन से इट कुड बी एस एच ए 256 एंड द नंबर इज 1400, right? So I'll be using 1400 as the dash m value. So ultimately dash m 1400. I would go ahead with that. Now ultimately इसके बाद मुझे देना है अपना फाइल का नाम in the file basically which would have my hash. तो उसके लिए मैं same folder के अंदर where I basically created my hash over here. So इसके अंदर चलते हैं. इसके अंदर basically I would create a file, right? So let's give new file.txt, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, एंड इसके अंदर मैं अपना दे देता हूँ हैश, राइट? सो hash.txt would basically have the hash which I want to break. So किस हैश को मुझे ब्रेक करना है, राइट? उसको कॉपी कर लेते हैं इधर से. दिस इज द हैश आई वांट टू ब्रेक विद हैशकैट, एंड इसको मैंने कर लिया कॉपी, यहाँ कर दिया पेस्ट. ठीक है, जस्ट लाइक हाउ वी डिड इट इन जॉन द रिपर. एक फाइल बना दी थी, यहाँ पर भी मैंने एक hash.txt नाम की फाइल बना दी है. एंड अल्टीमेटली अब जॉन द रिपर को मैं यहाँ पे जैसे बता रहा था, फॉर्मेट वगैरह दे रहा था, उस तरीके से मैंने यहाँ पे फॉर्मेट दे दिया है इसको, हैशकैट को. द अटैक मोड हैज बीन गिवन, द
format of attack has been given. मतलब format क्या मतलब hash किस type का है ये बता दिया है. Now I need to load the file. So my file is hash.txt that is also given, and then I have to give the word list. Word list is rocku.txt, वो भी दे दिया है. तो दो चीजें यहाँ पर मैंने दे दी है, hash.txt and rocku.txt. Both the things are basically given. So ultimately this would work over here. और क्योंकि मुझे सिर्फ brute force करना है, so I'll basically type in over here force. से क्या होगा कि इट वुड फोर्सफुली बेसिकली ब्रूट फोर्स इट जस्ट इन केस अगर कुछ इशू आ रहा हुआ मेमोरी के अंदर या कुछ के अंदर, तो भी इट वुड इग्नोर दैट एंड इट वुड फोर्सफुली जस्ट स्टार्ट द हैश कैट. सो आई जस्ट प्रेस एंटर and you have enabled force to bypass dangerous warnings and errors. क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि if your temperature लैपटॉप temperature increases up to 90 और 100 डिग्रीज, तो वो बेसिकली वहाँ पर उस चीज़ को बंद कर देगा और आगे चलाएगा नहीं. तो ये चीज़ें बाईपास हो जाती हैं, राइट. सो अल्टीमेटली it would basically go ahead and it would basically try to run over here. अभी पहली बार ये थोड़ा सा टाइम लेगा because it has to configure everything, right. आपके GPU के अकॉर्डिंग it would basically have to work. So let it basically work over here, and let's basically see um, what kind of output we would get, right. So ultimately it would take some time, it would take some time to basically go around with it, and अपने according basically ये काम करना शुरू कर देगा. So let's just wait again. So as soon as I press enter, इसने NVIDIA का CUDA runtime library उठाया है, and this usually is there when you have NVIDIA graphic drivers more than 1650, right? So RTC library नहीं चला पाया, but NVIDIA का CUDA library इसने चला दिया है. And CUDA SDK toolkit not installed. Why? Because my graphic card is NVIDIA 1650, and CUDA is most probably is in RTX versions. सो इसके ऊपर के जितने भी RTX 2050 है, RTX 3050, 3070, 4070, 4050, 4060 वाले GPU हैं, दे वुड ऑब्वियसली हैव दिस CUDA SDK, तो उनमें एरर नहीं आएगा. एंड अगेन इफ यू आर डूइंग ब्रूट फोर्सिंग, you should have good graphic card. Having just GTX 1650 in today's time is just a pretty simple, kind of it's an entry level graphic card now in today's time. So you would need a better graphic card. तो यहाँ पर ये चलना शुरू हो गया है, एंड यू कैन सी दैट अपने आप इसने चीज़ें कुछ और ले ली है, राइट. एंड ये कैप्स लगा दिए है हर एक प्रोसेसर के ऊपर कि कितना वो चलेगा, कैसे चलेगा. एंड इट इज़ बेसिकली टेकिंग द डिवाइस. ये AMD का मेरा जो इंटरनल ग्राफिक कार्ड है उसको स्किप कर रहा है, एंड इट इज टेकिंग माई GTX 1650, and it would be taking, you can see, it is telling me that 1 GB is allocatable, right. So it would basically take 1 GB from this particular graphic card. And उसके अलावा यहाँ पर चीज़ें क्या चल रही है, इनिशियलाइजिंग बैक एंड रन टाइम फॉर डिवाइस 4 इज माई दिस ग्राफिक कार्ड ओनली. तो इसके ऊपर बेसिकली ये चीज़ें चलाएगा, एंड ऑप्टिमाइजर्स अप्लाई कर रहा है अपने आप, एंड टेम्परेचर वार्निंग ट्रिगर कर दी है 90 डिग्री सेल्सियस पे, कि अगर 90 डिग्री टेम्परेचर पहुंचा तो वो उसको बंद कर देगा, right. So we just have to wait for it to basically work over here. Right now if I go into my task manager, you could see at the current performance is 72 degrees, and my NVIDIA GPU is right now at 38 degree. Pretty simple, मतलब अभी कुछ चल ही नहीं रहा है, 40 डिग्री 39 डिग्री पे है, राइट. सो यहाँ पर हैश कैट आकर रुक गया, राइट. एंड अल्टीमेटली रॉक्यू हमने दिया था क्योंकि इसको, दिस वाज द हैश, एंड इट्स बेसिकली टेलिंग मी क्रैक्ड, एंड दिस इज बेसिकली द आंसर. तो यहाँ मेरे को इसका सिंपल सा आंसर मिल गया है, पॉल. सो प्रिटी सिंपल, ठीक है. और ये किस हिसाब से करा था, यू कैन सी इट वाज डूइंग विद द स्पीड ऑफ इट 4752.3 किलो हैशेस पर सेकेंड. तो किलो हैशेस के थ्रू यू कैन अंडरस्टैंड द स्पीड गोज टू 4752 के आगे 3 0 लगा दो. दैट इज द स्पीड ऑफ व्हाट आई एम गेटिंग इन माय लैपटॉप, राइट. सो मेरे लैपटॉप में इसकी क्या स्पीड आ रही है, 4 लगभग लेट्स राइट इट 4752.3, ठीक है. इसके आगे अगर मैं पॉइंट को 3 आगे बढ़ाते हैं, फिर इसको 0 ही बोल देते हैं, 0 0 0. दिस इज द नंबर ऑफ हैशेस पर सेकेंड और नंबर ऑफ वर्ड्स पर सेकेंड ये बेसिकली ब्रूट फोर्स कर पा रहा है. एंड दिस इफ यू सी इज 47 lakhs, ठीक है. 47 lakhs को मैं एक साथ ब्रूट फोर्स कर पा रहा हूँ, राइट. एंड यू कैन सी कि इसने क्या किया था, मतलब अभी चलते हुए टाइम हुआ भी नहीं, एंड देर आर हाउ मेनी गिवन, लाइक यहाँ पे देखो 1,43,44,384 काइंड ऑफ वर्ड्स आर गिवन ओवर हियर, जिसमें से इट
scanned for 2,62,000 words in just a split second. इतना इसने split second में ही कर लिया, and we were able to get the password pretty simple from RockQ, right? So ये चीज है Hashcat की, that it is very very fast, and it is basically able to do these number of combinations in pretty easy way. And because we are using the GPU, so ultimately GPU से ये चीजें और ज्यादा easy हो जाती हैं और ज्यादा better हो जाती है. And you can see, if I'm getting this speed in my PC, you could have imagined that the PCs with higher number of GPUs and जिनका GPU variant भी अच्छा है उनको कितना ज़्यादा better advantage मिलता होगा, right? So ultimately that is the point. So we have got the answer as Paul, Paule. That is basically our answer, right? Let's take the next one over here. We have this one, and all I need to do is just copy this. अपने hash.txt के अंदर जाऊंगा और सिर्फ इसको रिप्लेस कर दूंगा, राइट? सो आई जस्ट रिप्लेस माय हैश. once I've replaced my hash, I need to basically look for that what kind of hash I'm talking about now, right? क्योंकि देखो अभी क्या है, पहले तो मैंने हैश को यहाँ पर बदल दिया था, राइट? मतलब कर दिया था, बट अभी मुझे ये चाहिए कि हैश किस टाइप का है. सो आई नीड टू बेसिकली चेक फॉर व्हाट काइंड ऑफ हैश इट इज. सो आई नीड टू बेसिकली गो फॉर एंड आई नीड टू बेसिकली सर्च फॉर दिस पर्टिकुलर हैश वर्जन. तो एक बार इसके नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, then 21, then 23, then 25, then 27, 29, 30. 30 characters का ये hash है, right? 30 hexadecimal characters. If you multiply 30 multiplied by 4, you will get 120 as the answer. तो 128 बिट्स का हैश किसका होता है? अब आप बोलोगे सर MD5 हो सकता है. नहीं, MD5 132 होता है. MD4 हैश हो सकता है. MD4 हैश ऊपर भी हमें मिला था एक, ये वाला था. सो MD4 हैश इज एक्चुअली ऑल्सो 30 डिजिट्स, मतलब वो भी 120 बिट्स का होता है. सो अल्टीमेटली इट कुड बी आइदर MD4 और इट कुड बी आइदर एनी अदर टाइप ऑफ हैश, राइट? नहीं, हैशकैट ऑटो डिटेक्ट नहीं कर सकता, आपको पहले डिटेक्ट करना होता है, राइट? सो वही मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ अभी. हैश एट व्हाट काइंड ऑफ हैश इट कुड बी, क्योंकि जो हैश होगा उसी के टाइप में आई हैव टू गिव दिस कमांड द एम वैल्यू, राइट? दिस पर्टिकुलर वैल्यू हैज टू चेंज अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट ऑफ द हैश, राइट? सो हैश टाइप आपको खुद से डिटेक्ट करना पड़ेगा, फिर हैशकैट काम करेगा. So ultimately over here you can see there is this NTLM hash that is given in MD4. Both hashes are given, and in दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, right? Because these both are 120 bits hashes. And if you ask me why MD4 or why NTLM I'm looking into, NTLM hashes usually शायद आपको ना पता हो, but they are very very much important hashes when you go into the level of what I could say, level of cryptography into active directory attacks. Basically offensive cybersecurity में NTLM hashes का बहुत ज़्यादा यूज होता है. So ultimately that is why I'm taking NTLM over here. तो यहाँ पे 1000 में ले लूंगा, and let's basically go forward. hash.txt में हमने चीज़ें बदल ही दी हैं, बस यहाँ पे हमें 1400 की जगह कर देना है 1000. Again, when we are running it, it would take some amount of time because already libraries configured है, तो अब टाइम थोड़ा सा कम लगेगा, and it would simply go around and do this, right? So initializing the runtime environment, let it do. विंडोज में होता है, हाँ विंडोज में होता है, राइट? सो bcrypt है, इसका पासवर्ड फाइंड कर दो. अच्छा ये bcrypt है, तो ये bcrypt है, तो इसका bcrypt का भी आने वाला आगे होगा ना, 2B वाला. विच क्वेश्चन यू आर टॉकिंग अबाउट? ये वाला कह रहे हो? देखो ये भी bcrypt था. इसको bcrypt को कैसे समझते हैं ना, $2 से शुरू होते हैं ये, राइट? अगर आप इधर से आकर देखोगे तो अल्टीमेटली इफ आई गो अराउंड एंड टाइप इन डॉलर, सॉरी $2, ठीक है? तो $2 से यूजुअली शुरू होते हैं आपके bcrypts. सो यहाँ पे देखो ये bcrypt आ गया ब्लोफिश के साथ, तो $2 के साथ आ गया ये पूरा. तो ये $2 से शुरू होता है, $2B, $2 ये वो जैसे अभी है. तो यू कैन बेसिकली गो अराउंड एंड आप 3200 का यूज़ कर सकते हो. यू कैन जस्ट ट्राई टू डू इट योर सेल्फ. मेरी वेबसाइट का है, ओके? सो बेसिकली 3200 करके आप यूज कर सकते हो. बट द पॉइंट इज अगेन, अगर आपका हैश मतलब आपका पासवर्ड इजी है जो रॉक्यू में हो सकता है, तब तो मैं वो चीज़ करूंगा. बट अगर नहीं है तो आई हैव टू यूज सम अदर वर्ड लिस्ट, राइट? सो इट डिपेंड्स अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द पासवर्ड जो आपने रखा होगा. इन्होंने तो हमें बता दिया दैट मोस्ट ऑफ दीज वुड बेसिकली गेट इनटू द रॉक्यू, ठीक है? सो लेट्स सी इसका क्या हुआ.
हाँ ये क्रैक हो चुका है. सो द पासवर्ड आई हैव गॉट इज दिस एंड इट्स क्रैक NTLM हैश. एंड अल्टीमेटली कितना इस बार हुआ, इस बार हम थोड़ा सा ज़्यादा आगे गए, राइट. सो वी डेड अराउंड 52 लाख researches and we were able to basically get our password over here. Pretty simple, right? So the point is that is what we have, right? So ये आ गया, ठीक है. एंड इसी के साथ साथ फिर ये वाला हैश भी कर सकते हैं, इसको भी देख लेते हैं लास्ट में, बिकॉज ये लास्ट वाला तो इजी है, प्रीटी सिंपल. बट ये भी देख लेते हैं क्योंकि $6 के साथ चल रहा है और इसमें सॉल्ट भी दे रखा है. अब मैं सॉल्ट वगैरह कैसे सप्लाई करूंगा ये चीज़ देखते हैं. हाउ डू आई बेसिकली गो अराउंड एंड अप्लाई अ सॉल्ट एज वेल. ठीक है. सो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे बेसिकली यहाँ पर ये देखना है दैट हाउ डू आई बेसिकली गो अराउंड विद माई सॉल्ट ओवर हियर, बिकॉज अल्टीमेटली आई ऑल्सो हैव टू गिव माई सॉल्ट टू द हैश कैट, राइट. सो इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, इसके लिए बेसिकली मैं अपना सॉल्ट का भी इस्तेमाल करूंगा. सो एक तो ये पूरा का पूरा आ रहा है उठ करके, राइट. दिस इज बेसिकली द थिंग दैट आई वुड नीड ओवर हियर. एंड अल्टीमेटली इसको मैं उठा करके दे देता हूँ आगे. और ये देखो सॉल्ट ऑलरेडी इसके अंदर प्रेजेंट है. रियली हार्ड सॉल्ट इज ऑलरेडी गिवन ओवर हियर. सो कैन से $6 से शुरू जो ये हो रहा है पूरा का पूरा, पहले सॉल्ट हो रहा है और फिर अल्टीमेटली ये आपका जो है दिस इज द कंप्लीट हैश वेरिएंट. सो नाउ दिस इज द कंप्लीट थिंग दैट आई वुड कॉपी राइट ओवर हियर. एंड ये पूरा का पूरा मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा, राइट. एंड अल्टीमेटली लेट्स जस्ट सिंपली change this thing into my hash.txt. यहाँ पर जाकर इसको बदल देते हैं, राइट. एंड देन अल्टीमेटली चलते हैं आगे और यहाँ पर देखते हैं कि व्हाट इज द हैश टाइप राइट नाउ. तो हैश टाइप समझने के लिए अगेन क्या था ये पूरा का पूरा हैश टाइप, वो चीज़ देखते हैं दैट इट वाज एक्चुअली स्टार्टिंग फ्रॉम $6. तो $6 वाले कौन से हैं वो चेकआउट करते हैं. सो $6 मैंने चेकआउट किया. देयर आर 17 मैचेस वी हैव गॉट, राइट. सो देखते हैं कौन कौन से आ रहे हैं. सो $6 से शुरू होने वाले हम लोग को देखने हैं. Then ultimately we have got this SSH, we have got this one, we have got $6 there. ठीक है. तो $6 से शुरू होने वाले ये आ रहे हैं, राइट. सो हियर वी आर बेसिकली गेटिंग SHA-512 क्रिप्ट. एंड अल्टीमेटली यहाँ पे यू कैन सी $6 से शुरू हो रहा है एंड इट इज हैविंग बाय $6 ओवर हियर. सो इट माइट बी 1800 हम यहाँ पे ले सकते हैं, बट हमें इसको देना है सॉल्ट वाला कि भाई सॉल्ट भी हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं, राइट. सो वी हैव टू बेसिकली गिव दैट ओवर हियर एज वेल. तो इधर मैं बेसिकली और देख लेता हूँ कौन कौन से हैं. यहाँ पे आप देखो ऊपर एक और आ रहा है, राइट. एंड हियर वी आर हैविंग आर थिंग्स, राइट. सो वी आर हैविंग लाइक HMAC SHA-512 की इक्वल टू सॉल्ट. बट यहाँ पर हमने कहीं की नहीं डाल रखी है ना, मतलब बेसिकली वी हैव नॉट गिवन द की ओवर हियर. सो की इज हियर, राइट. सो दिस इज द सॉल्ट इज देयर, बट ऐसे सॉल्ट नहीं है हमारा, सॉल्ट इधर बीच में है. So I have to use the correct version over here, right? But with the salt as well. और देख लेते हैं $6 का क्या कुछ और है हमारे पास. सो नहीं, एक ही आ रहा है $6 का जिससे वो स्टार्ट होता है. सो दैट इज व्हाट वी हैव ओवर हियर. सो वी हैव टू बेसिकली लुक फॉर कि ये किस टाइप का है. एंड अल्टीमेटली आई नीड टू लुक फॉर कि ये कैसे काम करेगा, राइट. सो अल्टीमेटली what I have to do is I have to basically use 1800 ओनली, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा क्लोज लग रहा है अभी फिलहाल के लिए. So let's basically try to use this 1800 only. Let's see if it works or not. So let's go to my hashcat और यहाँ पर इसको कर देते हैं 1800. That's it. Press enter. So ultimately वापस से ही शुरू होगा, right? And let's see if we could get the result, right? And शुरू हो गया है काम हमारा. So it would take some time and see if it would basically work or not, right? क्योंकि ये भी pretty simple है and उससे ज़्यादा कुछ है नहीं, right? अच्छा, इन वाले में ना लेटर्स गिनने का मतलब नहीं बनता, राइट अंकित, क्योंकि इन वाले में एक्चुअली देयर इज नो हेक्साडेसिमल. मैं हेक्साडेसिमल लेटर्स को गिन रहा था, राइट. बट बिकॉज दीज आर नॉट हेक्साडेसिमल स्ट्रिंग्स, राइट, यू कैन सी ये हेक्साडेसिमल है ही नहीं. इट हैज एनी काइंड ऑफ कैरेक्टर ओवर देयर, राइट. ABCDEF के अलावा देयर आर मेनी कैरेक्टर्स, मेनी अल्फाबेट्स गिवन ओवर हियर. सो ऑब्वियसली ये उस टाइप का हैश नहीं है. सो आई वोंट बी काउंटिंग द लेटर्स इन इट, राइट. आई वुड बी ओनली काउंटिंग द लेटर्स इन हेक्साडेसिमल टू चेक देयर साइज. इनका साइज कुछ भी हो सकता है, राइट. सो दैट इज
why we are basically checking over here. अब यहाँ पर ये क्या कर रहा है, rocky.txt आ गया, dictionary cache आ गया, and okay, so starting auto tune, please be patient, and we would be basically going around with it. So here let's see the status में अभी कुछ आ नहीं रहा है, right? And nothing is in the status as of now. So जैसे ही शुरू होगा ये आ जाएगा, right? So it's now it now have started to basically getting little bit laggy, right? So पर देख लेते हैं, ऊपर वाले में भी ऐसे ही आया था, राइट? बेसिकली इतना आया था एंड वी वर एबल टू बेसिकली गेट इट प्रीटी सिंपली, स्टार्ट हो गया था उसके बाद. बट फॉर नाउ दिस टाइम इट इज टेकिंग टाइम, राइट? और स्टेटस वगैरह भी नहीं दे पा रहा है. बट लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. इट शुड बेसिकली गेट इनटू इट बिकॉज फिनिश्ड ऑटो ट्यून. ठीक है, ऑटो ट्यून हैज बीन फिनिश्ड. लेट्स सी द स्टेटस नाउ. हाँ, अभी ये चालू हो गया है, राइट? सो अभी बेसिकली काम कर रहा है. विद टाइपिंग एस आई कैन चेक द स्टेटस and it is right now working into it, right? So SHA 512 crypt इसके ऊपर काम कर रहा है. This is the target hash we have taken and उसके अराउंड ही बेसिकली काम कर रहा है. तो अभी कितने रिजेक्ट हुए हैं? अभी चले हैं इतने, राइट? 1% टोटल. फिर से इसको देखते हैं. 2.5% हो गया, राइट? लास्ट जो हमारा हुआ था वो 36% पे मिला था, तो ये आई गेस इन्होंने थोड़ा आगे ही डाला होगा, 3%. सो अल्टीमेटली लेट्स सी दैट वेयर वी कुड बेसिकली गेट आर रिजल्ट्स फ्रॉम, क्योंकि अगर देखो रिजल्ट आया तो सिंपली आ जाएगा जल्दी से, राइट? नहीं आया तो इट वुड टेक सम अमाउंट ऑफ टाइम, right? So we have to wait for it to basically work over there, right? So let it see. Let's wait over here and let it finish its work, right? So 5% हुआ है अभी. ठीक है, तो 5% हुआ है. We have to wait and we have to basically work on it. We have to just be patient. अब आप बोलोगे सर स्पीड कैसे स्लो हो गई? पुराने वालों में तो बहुत तेज हो रही थी चीजें, बट इस वाले में तो यार इतना तेज मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ, राइट? वाई? बिकॉज अल्टीमेटली अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा बेटर अटैक यूज कर रहे हैं, राइट? विच वुड ऑल्सो टेक माई processing power, 92% processing power. My GPU is working at 68 डिग्री सेल्सियस. 100% efficiency से मेरा GPU फिलहाल काम करने लग गया है, राइट? सो यू कुड बेसिकली सी दैट व्हाट अ 3D गेम वुड टोक. मतलब आप देखो 1.1 GB वैसे ले रहा है ये, बट इट कुड आई कैन जस्ट बाईपास दिस पर्टिकुलर थिंग कि भाई तो 1 GB से ज़्यादा ले रहे तो उससे ज़्यादा लेकर भी ये काम कर देगा. So right now, why I've switched off my video क्योंकि हो सकता है you would not get my audio in the correct manner और Zoom would switch me off, right? Because ultimately पूरा का पूरा जो ध्यान है वो यहाँ दिया जा रहा है. So it would take its time, ठीक है? It would take its time and it would take its time to basically give me the result, right? Obviously एकदम से नहीं आएगा. It would take its complete time to basically give me the result because automatically चीजें the point is that it would basically go around and work on the things, right? So we have to wait for it, right? We have to see, and then ultimately we'll be able to get into it, right? So yeah, we have to wait and watch. और अगर इसमें नहीं आया तो फिर मुझे कुछ और करना पड़ेगा. आई हैव टू क्रिएट माई ओन वर्ड लिस्ट एंड ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स, तब वो चीज़ें चलेंगी साथ में. तो अल्टीमेटली आई कैन क्रिएट माई ओन वर्ड लिस्ट एज वेल ओवर हियर विद दीज काइंड ऑफ थिंग्स, राइट? ठीक है, तो मैं इसको भी बंद कर देता हूँ बिकॉज इट इज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम ओवर हियर, राइट? सो इससे अच्छा ऑनलाइन यूज कर लेते हैं, टाइम बचेगा. कर लो ऑनलाइन यूज, बट देन अगर नहीं मिलेगा फिर आप बताना, राइट? बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम ये वाले हैशेस आपको ऑनलाइन नहीं मिलेंगे, राइट? इफ यू जस्ट गो अराउंड एंड ट्राई दिस ऑनलाइन इट वुडेंट बी गिवन एनीवेयर ऑनलाइन. ब्रूट फोर्स तो करना पड़ेगा ना कहीं तो ब्रूट फोर्स करना पड़ेगा. इफ यू थिंक दैट ऑल यू नीड इज जस्ट क्लिक ऑन समथिंग एंड अल्टीमेटली यू शुड बेसिकली गेट द पासवर्ड आउट ऑफ इट, तो ऐसे नहीं होता है. साइबर सिक्योरिटी नीड्स रिसर्च, right? Research and the other kind of things that you need to do. So you have to wait. You need to have perseverance to do all these kind of things, right? तो ये मेन चीज है. प्रोजेक्ट में थोड़ी सी चीजें अलग होंगी. प्रोजेक्ट के अंदर यू वुड बी हैविंग अ लिटिल बिट डिफरेंट थिंग्स, राइट? प्रोजेक्ट में मैं अभी डिस्कस कर लूंगा, राइट? बट या फॉर नाउ वी कैन जस्ट सिंपली क्विट इट, राइट? ओवर हियर, राइट? एंड लेट्स गो फर्दर इनटू इट, राइट? ओके, सो यू कैन सी कितना ज़्यादा सीपीयू मेरा यूज़ हुआ, राइट? सीपीयू हैज़ बेसिकली गॉट द स्पाइक्स एंड आई वेंट टू मैक्सिमम ऑफ 3.5 गीगाहर्ट्ज जिस पर मैं एक्चुअली जा सकता था.
वहां तक मैं एक्चुअली गया एंड वहां तक जाकर के आई वाज एबल टू बेसिकली यूज दीस काइंड ऑफ थिंग्स, राइट? एंड इवन माय जीपीयू did its best to do all kind of things over here. The point is that we have all these kind of things done. That means ultimately we are able to um, use our hashcat, right? So hashcat से ही चीजें चल रही हैं, right? And ultimately the point is that we will be going over and we will be using many of my, जैसे प्रोजेक्ट हो रहा है तो प्रोजेक्ट के अंदर भी सेम चीजें हम लोग करेंगे. सो अल्टीमेटली अभी मैं क्या करूंगा, अभी लेट्स डिस्कस द प्रोजेक्ट वंस, ठीक है? प्रोजेक्ट को डिस्कस कर लेते हैं एंड लेट्स सी व्हाट वी हैव टू डू इन द प्रोजेक्ट, राइट? सो लेट्स बेसिकली सी व्हाट वी हैव टू डिस्कस इन द प्रोजेक्ट वंस. तो देखो प्रोजेक्ट के अंदर तीन प्रोजेक्ट्स हैं, right? So I've given you the three projects over here, right? And in these three projects, I will be going in certain things, right? There are three main projects that I have given. And in these three projects, there are three main things that I will be given, right? So let me just simply open the documentation of the project as well that I have given, right? So just a sec, let me go around and open the documentation. Also, this particular class would go till you know 10 p.m., right? Because obviously we need to work with our man in the middle attack as well. ठीक है, तो एक बार अगले 10 से 15 मिनट प्रोजेक्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं एंड देन अल्टीमेटली the next 10-15 minutes we will be going on with the man in the middle attack, right? So that is how we would basically go around. ठीक है, so let's see, let's go around and search for our where is the project document? Here is it. Here it is. And open. Okay, so this is the project document over here, right? So this is the first project that you are seeing on the screen. So ultimately, projects में क्या है देखो, there are like three questions that are given for you. The first is the cryptography challenge with Hashcat, right? इसमें आपको क्या करना है कि cryptography का use करना है, again Hashcat का use करना है, and you have to do certain things. For example, I have given a zip file over here, which is on this particular drive link, right? And once you go into this drive link, you will basically get a set of zip files, right? Which would basically be having the passwords over here, right? Right now, there is only one zip that is given over here. Soon I will be uploading two more zip files with some more, uh, you know, hashes over there. I just wanted to teach you first how to use crack hash. उसके बाद मैं यहाँ पे upload करता हूँ. So ultimately, this particular drive link would take you to certain files, two or three zip files. These zip files would be password protected. Now, just like how we did it yesterday, you need to basically hack into these zip files once, and once you are able to just crack the password for the zip file, you will be basically getting the password from like we'll be getting the password from that. And you can use rocku.txt. The passwords would be from rocku.txt, or it could be also from any other word list, right? So there are high chances that either it would be rocku or either it would be certain other things, right, that you would have to use, right? Now, ultimately, once you have cracked the password of the zip file, inside you will basically get a PDF file as well. And in that PDF file also there would be a password. Now you have to basically use either Hashcat, right? To basically you cannot use John the Ripper over here. You have to use Hashcat, right? So basically you have to use Hashcat to crack into that PDF file as well and get its password as well, right? So once you basically would get PDF files password, you would get you would basically complete the uh, project. Now in this project, it would basically be possible that you would say that sir ये crack नहीं हो रहा है. तो अगर crack नहीं हो रहा है उसका मतलब है you are not using the correct word list. So crack जरूर होगा, but you need to make sure that the word list you are using is the correct one that you would like to have. ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो ये हो गई that you need to use the correct word list and you need to basically go around and use the these kind of things over here. That is what you need to work around with. ये हो गया number one. And number two, once you have cracked into the zip file, you will be getting certain PDF files. You have to crack the passwords for the PDF files as well. And all the things that you would be doing, उसको आप document करोगे, right? You will be basically creating a Word file or a document file where you would be just putting in the screenshots of Hashcat, काम करते हुए Hashcat के screenshots,
जैसे मैंने अभी दिखाया काम करते हुए, और बेसिकली व्हाट यू सप्लाइड एंड व्हाट यू आर बेसिकली गिविंग आउट, क्या आउटपुट आ रहा है, क्या उसका इनपुट आपने दिया, कमांड क्या दिया पूरा का पूरा, दैट इज व्हाट यू नीड टू टाइप इन ओवर देयर। एंड इसका पूरा रिपोर्ट आप रेडी करोगे, राइट। एंड यू नीड टू बेसिकली गो अराउंड विद कमांड सिंटेक्स, आउटकम्स और पासवर्ड का जो रिकवरी है उसके स्क्रीनशॉट्स आप अटैच करोगे, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द लैब ओवर हियर। इसमें क्या होगा कि लाइक देयर वुड बी मेनली 3 zip फाइल्स आई विल बी गिविंग, राइट। सो अल्टीमेटली 3 टोटल zip फाइल्स होंगी, एंड अल्टीमेटली इट वुड इंक्रीज विद द लेवल ऑफ यू नो हैशेस। पहला हैश थोड़ा सा इजी होगा, दूसरा थोड़ा मुश्किल, तीसरा और मुश्किल। सो अल्टीमेटली देयर वुड बी 3 zip फाइल्स दैट वुड बी गिवन टू यू व्हिच यू हैव टू क्रैक यूजिंग योर हैश क्रैक, right? Then the project 2 is basically based on Linux scripting and automation, right? So this particular project focuses on scripting part, that ultimately you have to write a script. Now, once you're basically, you want to write a script over here, so you would like to basically understand about how you can go around with that. So to write this particular script, you need to basically go over and search for this. Like, so ultimately you can see this project focuses on enhancing students' understanding of Linux systems. So ultimately, the more you know about Linux, the more it is easy for you to understand this particular project, right? And ultimately, Bash scripting के अंदर काम करना है इसमें, right? So just like how we created that ls script in the first time, right? वही same चीज का हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं. So ultimately, what you have to do is you have to first of all have your Linux environment ready, right? Either a virtual machine of Kali Linux or any other thing through which you could have Linux over there, a cloud instance, a Docker, or if you have directly installed your Linux, right? Totally upon you. The first thing is, after the initial setup has been done, I have to simply write a script to search for the logs file larger than a specified size. ठीक है, तो आपको एक साइज ले लेना है. दैट साइज कुड बी एनीथिंग, पर्टिकुलरली लाइक 30 bits, 40 bits, और you can take the size like 1 kilobyte or something like that. And you have to search for certain log files, right? So कुछ log files आपको वहाँ पे search करनी है. As soon as you will be able to search the log files, you have to just compress those files into an archive, and then you have to just move that or cut paste that archive to a backup directory and delete the original files, right? Matlab, just try to understand what we are doing over here. Let's say that you will be given around 10 files, right? You will be given around, let's say, 10 files over there, and ultimately once you have those 10 files, you have to just simply um, you know, uh, simply just filter out, right? Just simply filter out the files, right, with a specified size. For example, like let's say I have given 10 files, and out of those 10, there are 6 files which are basically more than 1 KB. So you will be basically taking the files which is more than 1 KB, compress those files into a particular zip file, and then ultimately you will delete the original files. आप original files delete कर दोगे, और जो आपकी मेन फाइल्स हैं, मतलब जो जो कंप्रेस्ड फाइल है, वो आपकी वहां पर दिखेगी. Then you have to write the second script for monitoring the CPU and memory usage, राइट. सो बेसिकली यहाँ पर आप क्या करोगे कि सीपीयू की मेमोरी, सीपीयू एंड मेमोरी का जो भी रियल टाइम यूजेज चल रहा है फिलहाल आपके सिस्टम के अंदर, यू हैव टू इम्प्लीमेंट दैट कमांड ओवर हियर इन दिस स्क्रिप्ट. एंड देन जो भी डेटा आपको वहां से मिल रहा है, उस डेटा को आप उठा करके एक पर्टिकुलर एक दूसरे पर्टिकुलर फाइल के अंदर सेव करोगे. सो यू विल बी बेसिकली यूजिंग फर्स्ट ऑफ ऑल रनिंग अ पर्टिकुलर कमांड of the processes that are currently running in your memory, or like all these things like CPU status and all. And all these commands are pretty simple, right? If you just Google how do I check out the CPU status and memory usage in real time in my Linux, you would basically get the commands out of it. All you have to do is just create a script dot slash करके फिर वो चलेगा. And ultimately फर्स्ट ऑफ ऑल आप उस कमांड का यूज करके आप यहाँ से डेटा उठाओगे, और उस डेटा को एक दूसरी फाइल में लॉक कर दोगे. दैट्स इट. द थर्ड टास्क इज कि आपको बेसिकली एक और स्क्रिप्ट यहाँ पे करनी है. एंड दिस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट वुड रीड द लिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर पैकेजेस. मतलब एक टेक्स्ट फाइल है, उसके अंदर सॉफ्टवेयर पैकेजेस लिखे हुए होंगे, एंड इट हैज टू इंस्टॉल दोज सॉफ्टवेयर पैकेजेस. मतलब फॉर एग्जाम्पल देयर माइट बी 10 पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पैकेजेस written over here, and ultimately your script has to read that particular file and install all those particular system packages
सिस्टम पैकेजेस डायरेक्टली। तो वो चीज़ डायरेक्टली आपको करनी है। अब इसके अंदर ये पर्टिकुलर यहाँ पे जो फाइल्स दी जाएंगी वो भी मैं अभी अपलोड करूँगा। दीज आर द फाइल्स, लाइक यहाँ पर जो लिस्ट ऑफ आपको पैकेजेस दिए जाएंगे, दैट आल्सो आई विल बी अपलोडिंग इन सम टाइम, राइट। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। 3 टोटल स्क्रिप्ट्स इसके अंदर बनेंगी, एंड द डिलीवरेबल फ्रॉम योर साइड वुड बी कि आप तीनों स्क्रिप्ट्स को अपनी अपनी गिटहब प्रोफाइल पे डालोगे, एंड उस पब्लिक रिपोजिटरी को यू हैव टू गिव इन द यू नो इन द सबमिशन फॉर्म। ठीक है, सबमिशन फॉर्म के अंदर आपको बेसिकली अपना बैश स्क्रिप्ट देना है, एंड अगेन यू ऑल्सो हैव टू जस्ट क्रिएट अ डॉक्यूमेंटेशन, एंड उसके अंदर यू हैव टू जस्ट अपलोड ऑल द screenshots of the working as well, right? So वो script भी चाहिए, and I would be needing the screenshots or any working video if you have, वो भी आप upload करोगे। So ultimately that is what you can show in this particular section, right, in the task 2। ठीक है, समझ में आया task 2 क्या है? एक बार yes या no बोल देना chats में। Did you understand what is task 2? Yes। टास्क वन तो प्रिटी इजी इट वाज, राइट, बिकॉज अल्टीमेटली अभी हमने किया ही है। टास्क टू मैंने मतलब प्रोजेक्ट टू मैंने समझा दिया। प्रोजेक्ट थ्री देख लेते हैं। प्रोजेक्ट थ्री के अंदर यू नीड टू डू नेटवर्क स्कैनिंग विद nmap, राइट। सो वी डिड nmap, वी डिड लर्न nmap, वी डिड लर्न इट्स स्क्रिप्ट scans, we did learn its normal scanning process, port scanning, service scan, right, and all these kind of scans, version scans and all। तो इसमें आपको क्या करना है, scanme.nmap.org करके एक वेबसाइट है, उसको आपको nmap से स्कैन करना है। nmap से स्कैन करने के बाद अल्टीमेटली आप उसके ऊपर बेसिक स्कैन परफॉर्म करोगे। बेसिक स्कैन के बाद आप उसके ऊपर टीसीपी सिम स्कैन परफॉर्म करोगे, राइट, एंड उससे जो भी होस्ट पता लग रहे हैं उनको आप रिपोर्ट करोगे एक फाइल के अंदर। देन अल्टीमेटली आप डिटेल स्कैन करोगे, वर्जन स्कैन, उसका स्क्रीनशॉट कॉपी पेस्ट करके लगाओगे। आप ओएस डिटेक्शन स्कैन करोगे, उसका स्क्रीनशॉट कॉपी पेस्ट करके लगाओगे। नॉट ओनली यू हैव टू जस्ट पुट इन द स्कैन रिजल्ट्स, बट यू ऑल्सो हैव टू एनालाइज देम कि भाई आया क्या है। अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम निकल के आया है तो उसको अलग से आपको मेंशन करना पड़ेगा कंक्लूजन में, दैट दिस इज ऑपरेटिंग सिस्टम दैट आई एम गेटिंग। यू हैव टू मेंशन द वर्जन्स ऑफ द सर्विसेज दैट आर बेसिकली वर्किंग ओवर देयर। यू हैव टू यूज NSE और स्क्रिप्ट स्कैन्स ओवर देयर, लाइक वल्नरेबिलिटी स्क्रिप्ट हो गई, HTTP एनब्रेशन स्क्रिप्ट्स हो गई। देयर आर 3 4 5 scripts that you have to use। again वो scripts को भी मैं यहाँ पर लिख के दूंगा, that what kind of scripts you have to use, right। and ultimately through that you will be running your script scans, and ultimately उन script scans का भी जो result आएगा उसको आपको conclude करके you have to paste the photos as well in that documentation, but you also have to give the that particular thing, like that particular analyzation of it as well, कि आपकी language में उसका क्या analyzation आया है, right। if you try to use chat gpt with this, right, obviously you can use chat gpt here as well and here as well, and ultimately chat gpt अगर आप यूज करते हो, then ultimately I'm not saying it's wrong to use gpt, obviously it would be good to use gpt अगर आप कर पा रहे हो और उससे डेटा निकाल पा रहे हो। for example you can write the complete scripts with gpt, but ultimately उसको अगर आपने लिखा एंड आप चला नहीं पाए तो वो चीज़ सामने मेरे को समझ में आ जाएगी, राइट। सो अल्टीमेटली विद the complete thing, right? If I understand that it's written by GPT in some way, right, I'll deduct marks for that, right? Because obviously you can use GPT to understand the topic or the project कि यार इस टाइप का स्क्रिप्ट होगा, बट उस चीज को करना खुद से, ठीक है। सो अल्टीमेटली ओवर हियर वी हैव द nmap स्क्रिप्ट, इसको आप चलाओगे स्क्रिप्टिंग इंजन को, एंड अल्टीमेटली वल्नरेबिलिटी स्क्रिप्ट और HTTP एनब्रेशन वगैरह आप चला करके यू विल बी वर्किंग इन दैट, राइट। सो अल्टीमेटली यहाँ से निकल के आएगा एक रिपोर्ट। रिपोर्ट के अंदर पूरा का पूरा ये सब कुछ लिखा हुआ होगा इन दोनों स्कैन्स का, 1 2 3 4 5 स्कैन्स होंगे टोटल, एंड दिस 5 स्कैन्स का पूरा स्क्रीनशॉट्स, राइट, with the input and output, and ultimately then your analyzation, आपकी summary, and ultimately कौन कौन से ports open हैं, कौन सा operating system given है, वो सब आप पूरा conclude करके यहाँ पर लिखोगे। Not only that, but जब आपको versions मिलेंगे तो you also have to write the potential vulnerabilities। potential vulnerabilities का क्या मतलब है, that if this particular port is open and it has this particular service running on it, तो ultimately इसके ऊपर कौन सी potential vulnerability हो सकती है, उसके लिए आपको गूगल करना पड़ेगा। यू हैव टू यूज गूगल और यू हैव टू यूज चैट जीपीटी, दैट व्हाट काइंड ऑफ vulnerabilities could exist on this version of the service।
फॉर एग्जाम्पल अगर एक सर्विस है एंड दैट सर्विस इज जस्ट अ प्रीटी सिंपल सर्विस लाइक SSH है, एंड अगर उसका एक वर्जन चल रहा है लेट्स से 7.2p1, तो आप गूगल करोगे SSH 7.2p1 के ऊपर क्या क्या वल्नरेबिलिटीज थी। जैसे मैंने SSH डाला 7.2p1 मैंने यहाँ पर डाला, एंड अल्टीमेटली मैंने आगे डाल दिया एक्सप्लॉइट्स या फिर वल्नरेबिलिटीज। सो इट वुड बेसिकली गिव मी कि उसके ऊपर क्या क्या वल्नरेबिलिटीज आई थी। सो इफ आई जस्ट गो इनटू माय एक्सप्लॉइट DB और बेसिकली ओवर हियर माइट्रे, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी CV आ रही है निकल के 3115। तो अल्टीमेटली यहाँ पर मैं बेसिकली लिख सकता हूँ दैट दिस इज द वल्नरेबिलिटी ओवर हियर दैट आई वुड हैव टू राइट, दैट इसके ऊपर ये वाली वल्नरेबिलिटी हो सकती है, authenticated XAuth command injection. Now this vulnerability could basically exist over here. तो ये vulnerabilities आपको गूगल पे रिसर्च करके you have to mention it over there, right? And ultimately इस तरीके से बहुत सारी vulnerabilities हो सकती हैं अलग अलग कोड्स पे, तो वो आपको मेंशन करनी होंगी. Then ultimately that is how you would have to give this particular thing, right? So these are three main projects. You can pick any one of the project from these three, right? Either this Linux Bash scripting, either the cryptography one, or either this network scanning one, right? So it's basically totally upon you which you want to pick over here. तीनों अपने आप में हार्ड होंगे, लाइक इफ यू पिक द क्रिप्टोग्राफी वन, हो सकता है कि सेकंड या थर्ड वाली जिप फाइल के पासवर्ड से आप क्रैक ना कर पाओ rocky.txt से, right? If you pick the project 2, it would be a little bit on the intermediate level of scripts, because ultimately वो scripts चलानी कैसे हैं और उनको रन करना है और ये डेटा निकाल के लॉग करना और ये सब करना, it would be a little bit because it needs basically the understanding of Linux and commands, right? एंड इसके अंदर भी अगर आपको vulnerabilities वगैरह स्कैन करनी है और उनके बारे में डेटा लिखना है, so it would take some time and research to do this. So all the labs would basically take your research and time to complete, एंड अल्टीमेटली दैट इज व्हाट द प्रोजेक्ट्स आर. समझ में आया तीसरा प्रोजेक्ट भी? यस या नो बोल देना एक बार. लास्ट डेट क्या होगी वो आपको पता लग जाएगा बाद में, बिकॉज आई डू नॉट हैव द इंफॉर्मेशन ऑन दिस. मोस्ट प्रोबेबली इट वुड बी फ्रॉम टुमारो, तो ऑब्वियसली इट वुड बी लाइक फॉर 1 week or 8 days, समथिंग लाइक दैट. सो अल्टीमेटली योर लास्ट डेट कुड बी समवेयर अराउंड लाइक, अभी वी हैव Tuesday, right, today. So ultimately your last date could be either this year complete of the December, right, or it could be like either till 3rd of or like 1st of or 3rd of next month. So ultimately वो चीज़ आप एक बार कंफर्म कर लेना गौतम सर से, राइट, एंड अदर पीपल अदर फैकल्टी ओवर हियर जो आपको बता देंगे कि इसकी लास्ट डेट्स वगैरह क्या है, राइट. सो वी हैव बेसिकली अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर थिंग. इट विल बी शेयर्ड, इट विल बी शेयर्ड. ठीक है, ये अपने आप शेयर हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट. बाकी इसके अंदर अभी कुछ चेंजेस होने हैं. फॉर एग्जांपल दिस पर्टिकुलर जिप फाइल वुड हैव लाइक 3 जिप फाइल्स यहाँ पर आ जाएंगी एक ही डायरेक्टरी के अंदर. देन अल्टीमेटली इधर भी अभी कुछ कमांड्स हैं जो मुझे यहाँ पे आपको देने हैं, तो वो चीज़ें अभी कुछ माइनर चेंजेस करके आई विल बी शेयरिंग दिस वंस अगेन, राइट. So that is basically how it would basically be worked over here. So next thing, let's just end up the class, but end करने से पहले एक छोटा सा attack for the next 10-15 minutes और देख लेते हैं. That we promised to see man in the middle attack, किस तरीके से man in the middle attack perform किया जाता है और कैसे इसको किया जाता है. So let's basically do that and then we can just end today's session. राइट. सो वी हैव दिस काली ओवर हियर. मैं यहाँ पे एक काली ऑपरेटिंग सिस्टम ले रहा हूँ मैन इन द मिडल अटैक्स को परफॉर्म करने के लिए, एंड अल्टीमेटली आई विल बी डूइंग दिस मैन इन द मिडल अटैक बिटवीन 2 ऑफ द पार्टीज, राइट. मतलब मैं क्या करूँगा, मैं 2 पार्टीज के बीच में मैन इन द मिडल अटैक करूँगा बिटवीन माई डिवाइस 1 एंड डिवाइस 2. सो डिवाइस 1 जो होगा वो मेरा Windows 7 होगा. So I'll be opening my Windows 7 over here over on this VM, and I'll be taking one more Kali Linux over here as my device 2. राइट. सो ये तीनों के तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम्स एक ही नेटवर्क पे कनेक्टेड होंगे. बिकॉज ये तीनों एक ही नेटवर्क पे कनेक्टेड होंगे तो इट वुड बी इजी फॉर मी टू गो ओवर एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर, राइट. सो एक बार अपना काली को खोल लेते हैं एंड लेट्स सी इफ वी आर एबल टू गेट कनेक्टेड इन द ड्राइवर्स, राइट. सो yesterday it was showing me some error, but let's see if we are able to communicate. Yeah, we have the wired connection going in, and ultimately shell हमारे पास आ रहा है, and उसी के साथ साथ we also have our Windows 7 logging in, right. We have our the next Kali variant also logging in. So Windows 7 पे we have to give the password. The password is 1234, right, and
then we have to basically go into our Kali. This Kali is right now booting to take some time, right? So our Windows is booted right now. We have our Windows 7 over here. Pretty simple. Yeah. So we got our Windows. And here we have our Kali, the main Kali, which you would be using. So this is basically, let's see, ifconfig. Yes, we are able to basically get our H0 over here. So when we are able to get our H0, we know that yes, we are able to basically get into this particular thing. So H0 connections are basically given, and we can simply just connect with my H0 connection over here. So H0 connections could basically give me the idea that yeah, I can basically connect with the other operating systems as well. So what I need to do is I need to basically connect with the other operating systems, and with the other operating systems, I would be able to go around, and I will be able to just try to hack into it, or simply just try to understand what they're talking about, right? So let's just see if they are in the same network. So for my Windows 7, I would be going into my command prompt, and I would be checking in the IP. So IP config. So it's 1.6. So yeah, they are both in the same network. Let's see about this Kali as well. So this Kali has the username as Sanjay and password as Kali, right? So over here, we have our Kali over here. So let's open the terminal for my Kali as well, right? So let's open that. And ultimately, if I just see ifconfig, right? So I'm having 1.7 over here. You can straight up see the difference, right? In this Kali, ultimately, this particular Kali is pretty old. It's 2020.3 version, and I'm running Bash, not ZSH over here. That is why it's coming in the like front of it. But in the latest Kali edition, you can see it comes like in the bottom, and it uses ZSH. So if I use ifconfig again, it would simply tell me, do you want to use ifconfig? But in my older Kali edition, it just doesn't show that particular thing. So ultimately, that is how these two things are configured. So now I've created a home lab over here where you can see what I am right now doing is that I am pretty much having the things like this. For example, let me explain you what I'll be going to do. So right now, what I'm going to do is I have this router over here, present over here. With this router, I have three operating systems connected. Here is my Kali 1. Right, here is my Kali 2, and here is my Windows 7. Right, so ultimately, here are the hosts that are basically there. So this Kali 2 is basically having a MAC address. Windows 7 would also have a MAC address, and the Kali 1 would also have a MAC address. Now, this Kali 1 is, let's say, my attacker. Right, so this basically is my attacker, and I would like to basically listen between these two people that what Kali 2 is talking with Windows 7. Right, so any interaction if these two operating systems are making with each other, I want to basically understand what kind of interactions are they making with each other. So for that to basically understand, I would like to go forward, and I would basically like to understand about how my Kali attacker, Kali 1 and Kali 2 would basically talk to with each other. So basically what I would like to know is I would like to understand their ARP table. Right, so I would like to understand their ARP table, and as I told you, ARP table is basically a table between the IP address and the MAC addresses. So these are your MAC addresses, these are your IP addresses, and ultimately there's a table between MAC addresses and IP addresses over here, right? So ultimately, we have this thing particularly over here. We have the MAC, we have the IP, and ultimately, we would have the MAC address of the attacker as well given over here, and the IP over here, and Kali 2 as well, and Windows 7 as well, right? So let's say that the IP address of my Kali 1 is could be something like we have already seen it's 1.10, right? For Kali 2, Windows 7, it's 1.6, and for Kali 2, it's 1.7, right? And for router, it's 1.1, obviously. So ultimately, let's also write their MAC addresses, right? Let's put an IP addresses 1.1, 1.10, 1.7, and 1.6, right? So let's also put in our MAC addresses, right? So let's use our MAC addresses. Let's say that
we have this Kali one over here, right? So ultimately we have our MAC address. Let's say it has MAC address as XYZ. This particular Kali 2, let's say it has MAC address ABC. Let's say my Windows 7 has MAC address as MNO. And let's say router has a MAC address of PQR. So I have given the MAC addresses over here. So ultimately PQR for my 1.1, 1.10 has XYZ, right? And ABC would be given over here and MNO would be given over here. So what I would do with this man in the middle attack is that I would simply tell my this particular Kali 2 that, hey Kali 2, do you know that there is a device connected to you which is called as MNO? Now that MNO device has changed its IP address and it is now right now connected to 1.10, right? So this is what you will be telling to your this operating system Kali 2. So Kali 1 would go to Kali 2 and Kali 1 would basically ask Kali 2 that, hey Kali 2, do you know that the device that is connected with MNO, this MNO device that was connected to you is right now on 1.10, right? Rather than on 1.16, right? Oh, sorry, 1.6, it is basically on 1.10 now. So my Kali 2 was like, Kali 2 will be like, okay, as you say, it would basically change its ARP table. So Kali 2's internal ARP table will get changed. So it would think that the device that is connected, MNO device that is basically connected to the router is not on 1.6 but on 1.10, right? So all the traffic that Kali 2 has to send to basically Windows 7 would now be sent to Kali 1, right? So this particular connection that you can see will be broken, right? So this point of connection will be broken, right? And ultimately the Kali one would basically also go to Windows 7 and ask Windows 7 that, hey, Windows 7, do you know that this Kali 2 device, this ABC device that was connected with you on 1.7, now this device is not on 1.7, but this device is on 1.10, right? So now my Windows 7 would like, okay, as you say, it would also understand and it would also just simply change its internal ARP table, and this connection would also be broken, and the connection of this would basically start like this particular connection would then connect. Why? Because we are telling Windows 7 that this ABC device is right now on 1.10, which is my attacker's IP address, and we are also telling my Kali 2 that this particular one MNO is not on 1.6 but on 1.10. Hence, Kali 2 will also send all the data that it has to send to Windows 7 to my Kali 1. So it would start doing that. Ultimately, if you see this diagram, ultimately you can see that Kali 1 now is in the middle of Kali 2 and Windows 7, right? So now this diagram, if you just flip the arrows like this and this, you can basically see that your Kali 2 is now between Kali 1 is now between Kali 2 and Windows 7, right? Now, if you think that this is too big of an issue, that how this you can do, right? So ultimately, this is pretty simple, right? You just have to use a tool called as Ettercap and it would do everything on its own, right? So I'll just simply go and use Ettercap over here, right? So ultimately that is the thing. Now if you have the question that Kali 1 ने Kali 2 को जाकर बोला कि भाई MNO वाला डिवाइस जो है 1.6 की जगह 1.10 पे है तो उसने मान क्यों लिया? Why these devices are actually getting the instructions from Kali 1 and working on that, because ultimately this is the ARP feature, right? This is the feature of ARP request where if you want to basically change your ARP devices or ARP table, you can do that. This is the feature given by ARP which you are exploiting, right? So that is what we are actually doing. तो इसको practically अगर मुझे करना हो तो उसके लिए मुझे सिंपली क्या करना है, मेरे को सिंपली यहाँ पर जाना है अपने एटरकैप टूल के अंदर. सो अल्टीमेटली यू कैन सी दैट एटरकैप टूल का यहाँ पर ग्राफिकल एडिशन भी अवेलेबल होता है एंड दैट इज मच मोर बेटर एडिशन. सो एटरकैप over here you can see this is the tool. So I'll just click on it and ultimately over here हम लोग यहाँ पे पासवर्ड टाइप करेंगे हमारी काली का बिकॉज इट नीड्स सूडो यू नो सूडो परमिशंस एंड देन अल्टीमेटली मुझे बस इसको स्टार्ट कर देना है एक्सेप्ट
एंड इट वुड बेसिकली स्टार्ट। तो ये क्या करेगा, ये डायरेक्टली अटैक को शुरू कर देगा, बट हमें अभी अटैक को शुरू नहीं करना है, सो विल फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉप द अटैक। इफ देर इज एनी MITM अटैक दैट इज वर्किंग राइट नाउ, तो आप उसको ये ऊपर वाला बटन दबाकर स्टॉप कर सकते हैं। The next thing that I want to do is I would basically click on this earth icon and you can see यहाँ पर मैं अपने सारे अटैक्स कर सकता हूँ। Most of these attacks are just deprecated now. ARP poisoning is the main attack which is your man in the middle attack. Right, so हम इसका यूज करने वाले हैं। So उससे पहले we need to scan for the host। तो हम क्या करेंगे, होस्ट लिस्ट निकालेंगे। राइट नाउ यू कैन सी द होस्ट लिस्ट इज दिस। राइट, ये पुरानी होस्ट लिस्ट कैशे करके आ रही है, तो मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ इन होस्ट्स को एंड आई वुड बेसिकली गो अराउंड एंड स्कैन फॉर द होस्ट। तो मैं यहाँ पे होस्ट को स्कैन करता हूँ। ये क्या करेगा, ये nmap की तरह पूरा का पूरा होस्ट स्कैन करेगा और आपको ARP टेबल दे देगा। इट वुड गिव यू द ARP टेबल। सो अल्टीमेटली यू कैन सी 1.1 इज माई राउटर, 1.2 इज माई विंडोज डिवाइस, 1.10 इज माई काली डिवाइस जो अटैकर है। अटैकर का यहाँ पे नहीं दिखता है क्योंकि दिक्कत करेगा भी क्या, आपको अपने बीच में थोड़ी ना मैन इन द मिडल करना है। यू हैव टू डू मैन इन द मिडल बिटवीन द अदर टू पार्टीज, राइट। सो 1.10 is not visible over here, which is my attacker, and this 1.7 is ultimately my Windows machine. I saw that, right? So यहाँ पे वापस आकर एक बार यहाँ इसमें काली में आकर देखते हैं, या 1.7 was my Kali 2, right? And this Windows 7 machine was 1.6, right? So इसको भी देख लेते हैं एक बार वापस से, IP config. So yeah, this was 1.6. So ये 1.6 पे है, right? This is basically my first machine that I want to attack to, and this is my second machine. जिन दोनों के बीच में मुझे आना है। 1.5 and 1.4 could be my mobile phones over here, and 1.2 is basically my Windows operating system, right? So इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं टारगेट 1 में डाल दूंगा एंड 1.7 को टारगेट 2 में डाल दूंगा। ठीक है, दोनों को एक एक टारगेट में ऐड कर दिया एंड यू कैन ऑल्सो सी द टारगेट लिस्ट, राइट, करंट टारगेट्स एंड बोथ द टारगेट्स आर बेसिकली सेट। जैसे ही ये दोनों टारगेट सेट हो गए, ऑल आई हैव टू डू इज जस्ट बेसिकली स्टार्ट दिस मैन इन द मिडल अटैक। सिर्फ मुझे इसको शुरू कर देना है। सो एज सुन एज आई क्लिक ऑन दिस ARP पॉइजनिंग, द अटैक वुड स्टार्ट। ठीक है, अभी आपसे ऑप्शन पूछेगा स्निफ रिमोट कनेक्शन। यस, आई डू वांट टू स्निफ द रिमोट कनेक्शन। अगर इसको बंद कर दिया तो ये करेगा ही नहीं, मतलब ये इसको अटैक ही नहीं करेगा। यू हैव टू चेक दिस ऑन सो दैट इट कुड अटैक वेल। अगर आपने सेकेंड वाला भी चेकबॉक्स कर दिया, so what it would do that it would only poison one way, मतलब 1.6, all the data that is sent from 1.6 will be uh, will be seen, but all the data that is coming from 1.7 to 1.6 will not be sniffed. So you would like to sniff both ways, that whatever the data is going between 1.6 to 1.7 and 1.7 to 1.6, we'll be looking into that. So ultimately, that is what we will be looking into and we will be basically seeing over here. So for this to basically work, मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं इसको ओके करूंगा, बट ओके करने से पहले मैं एक और चीज यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। लेट मी बेसिकली शो यू वन मोर थिंग ओवर हियर। सो आई विल ओपन वायर शार्क, राइट, मैं वायर शार्क यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ एंड लेट मी शो यू दैट वायर शार्क पे भी क्या ट्रैफिक आ रहा है, राइट, बिकॉज देयर वुड बी अ सडन चेंज ऑफ ट्रैफिक वंस यू विल बी सीइंग। सो अल्टीमेटली अगर मैं H0 के ऊपर अगर अगर आपको करंट ट्रैफिक दिखाऊं, सो दिस इज द करंट UDP पैकेट्स दैट आर बीइंग ट्रांसफर्ड। So these packets are just simple packets where these are only coming because right now I'm connected to Zoom meeting. तो वो UDP पैकेट्स दिखा रहा है Zoom मीटिंग के, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। एंड इट्स अ डेटा बिटवीन 1.2 my Windows device and basically my Zoom IP address, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, राइट। बट व्हाट इफ आई डू सर्टेन थिंग्स, राइट, कि अगर मैं यहाँ पे इसको स्निफ करना चालू कर दूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो स्निफिंग शुरू हो गई है एंड इफ दिस काली, राइट, अगर ये पिंग करता है, राइट, लेट्स सेंड सम डेटा फ्रॉम माय काली 2 टू माय विंडोज मशीन, विंडोज 6, सॉरी विंडोज 7 मशीन। सो अल्टीमेटली देखो यहाँ पे पिंग रिक्वेस्ट चालू हो गया। ये जैसे ही पिंग रिक्वेस्ट चालू हुआ, मेरी करंट काली के वायर शार्क में वी विल बी एबल टू बेसिकली सी द रिक्वेस्ट कमिंग इन। ठीक है, अभी यहाँ पे दिख नहीं रही होंगी क्योंकि बहुत तेज डेटा आ रहा है। सो मैं अभी इसको स्टॉप कर देता हूँ, राइट, एंड उधर मेरा पिंग चल रहा था, इस पिंग को भी मैं यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ। अटैक अभी भी गोइंग ऑन, अटैक इज ऑल्सो गोइंग ऑन एंड लेट मी जस्ट फिल्टर द रिजल्ट्स, राइट। सो IP.addr इक्वल 192.168.1.1.6 से फिल्टर कर लेते हैं बिकॉज 1.6 इज द machine, Kali 2 machine. So you can see. Now you can see the data between 1.6 and 1.7. राइट, ये देख सकते हो 1.6 और 1.7 के बीच का सारा डेटा मेरे को यहाँ पे विजिबल कर दिया गया है। मतलब 1.6 का डेटा, 1.7 का डेटा, 1.7, 1.6, 1.6, 1.7,
every particular piece of data is right now visible to me. And when this data is basically visible to me, that means I am able to see this. अभी देखो ICMP packet ही गया था. There was only the ICMP packet that was basically given. So it was just a ping packet because we were pinging it. So we were able to see this. But if 1.6 would be talking to 1.7, and if there would be any password or if there would be any exchange of any particular thing, and there is no SSL protection available, if they are basically talking with HTTP protocol or FTP protocol, so ultimately मैं वो सारी चीजें राइट क्लिक करके फॉलो करके देख पाऊंगा. सो राइट नाउ ये तो अभी आईसीएमपी पैकेट है तो ये फॉलो हो नहीं सकता, राइट, बिकॉज अल्टीमेटली इन आईसीएमपी पैकेट यू कैन नॉट सी, बस ABCD ही जाता है इसके ऊपर पिंग पैकेट्स के अंदर, तो इट डजेंट बेसिकली गो विद अ लॉट ऑफ डेटा ओवर हियर. बट या, you can actually understand the things, right? So that is how we would be able to filter it out and we would be able to check the results over here. That is the major point of man in the middle attack, right? ये अटैक अभी भी काम कर रहा है, unless and until I'll stop my ettercap, ये अटैक काम करता रहेगा. तो जैसे ही मैं स्टॉप कर दूंगा, अब ये पूरा का पूरा मैन इन द मिडल अटैक स्टॉप हो जाएगा, एंड नाउ इट वुडंट स्निफ द डेटा, राइट. सो दैट इज हाउ यू कैन डू दैट. ऑल यू हैव टू डू इज कि आपके पास दोनों का IP एड्रेस होना चाहिए, एंड वंस यू हैव द IP एड्रेस ऑफ बोथ द ऑपरेटिंग सिस्टम्स, राइट, you would be able to simply go around and simply just do a simple man in the middle attack. ठीक है. एंड इफ यू आर इन द नेटवर्क तभी आप man in the middle कर सकते हो, ऐसे नहीं कर सकते, right? So yeah, that marks the end of our course 1, right? We have completed a lot of practical attacks. We have completed a lot of things: information gathering, cryptography, Linux, networking, Cisco Packet Tracer. Ultimately, we have learned a lot of things now in the last 30 days. Hope so. The journey was comfortable with you guys, right? आप लोगों को भी सीखने को मिला होगा. And we started our course on 19th or 20th of November, and here we are, just completing it on the Christmas Eve, right? So a very best of luck to everyone for all the projects, right? And basically for the coming course as well, right? And I would say if it's your first class, thanks a lot to attend this, right? You can just simply go around and just check everything on the YouTube, right? So this was the last lecture actually, which you attended for the first time. So I have taught everything, right? So there are like 23 sessions overall. This is the 23rd session. So all the other 22 sessions are uploaded on the YouTube playlist, right? So that is what we have. Just a sec. Let me just share with you the playlist link as well, and also the feedback form for today as well, right? So here's the, just a sec, Fazil, just fill up the feedback form once, then you can go, right? So here is the feedback form, and here is the playlist where you can find all the video lectures for the classes. So this particular things that I have taught, right, all the 22, 23 lectures that we have completed so far will be given or will be available on this YouTube channel, right? So yeah, that is all from my side for today, right? Thanks a lot, guys, for moving forward with the course, right? Hope so I'll see you again in the coming month as well. Okay, so goodbye, good night, a very happy Merry Christmas to you, and a very happy New Year, right? Celebrate as much as you can, and yeah, thanks a lot. Okay, good night.